Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. इसलिए है, इसके अंदर कामयाबी नहीं है. Mungkin terbetik di hati kita kalau sekiranya yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang mencukupi oleh Allah, yang menumbuhkan segala-galanya adalah Allah. Lantas untuk apa adanya pertanian? Untuk apa adanya pasar? Untuk apa adanya pabrik-pabrik dan sebagainya? Apakah kita berpangku tangan saja menunggu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah, adanya pertanian, adanya perdagangan, perkilangan, pabrik dan lain sebagainya, itu bukan berarti Allah tidak mampu untuk memberikan rezeki kepada manusia secara langsung, tidak, tapi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia mampu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dalam pertanian? Apakah manusia mampu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan perikanan, perkilangan, pabrik dan lain sebagainya tersebut? Maka semua bentuk-bentuk yang kita lihat di permukaan dunia, baik itu pertanian, perdagangan, pertambangan, semua tersebut adalah ujian daripada Allah di tengah-tengah manusia mengarungi kehidupan dia sehari di dunia tersebut. Apakah mampu untuk melihat perintah Allah atau tidak memperhatikan perintah Allah? अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दावत तबलीग में ये बात कही जाती है कि इस यकीन को हासिल करना ये मकसूद है हमारा. Maka kerja kita ini hadirin yang namanya dakwah dan tabligh yang kita gerakan, baik al-maqami atau 4 bulan, kewajiban 40 hari sebagainya, tujuannya adalah ke sana, bagaimana kita mengenal Allah, melaksanakan hukum Allah. और ये यकीन किस तरह हासिल होगा? जब हम अल्लाह का बोल बोलेंगे, जब हम अल्लाह की बड़ाई को बयान करेंगे, इससे अल्लाह की बड़ाई हमारे दिलों में आएगी. Dan bagaimana keyakinan yang terhujam dalam hati kalau kita tidak mengantuk, Pak? Kalau kita tidak ngantuk, angkat kepala lagi hadirin. Jadi beliau katakan bagaimana keyakinan terhujam dalam hati kita. Kalau lagi dan lagi kita bicara kebesaran Allah, maka nggak bisa bicara kebesaran Allah kalau kita ngantuk. Jadi hal Allah Subhanahu wa taala bicara lagi dan lagi kebesaran Allah, kemudian lagi-lagi kita dengarkan orang bicara kebesaran Allah, maka dengan membicarakan, memperdengarkan lagi dan lagi kebesaran Allah akan mulai tertanam keyakinan kepada Allah di hati kita. Bersedia insyaallah semuanya. भाई मैं भी और आप भी हम सोच लें कि सुबह से लेकर शाम तक हमारी जबान पर कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम आता है. Sekarang kita introspeksi hadirin, baik saya atau saudara-saudara, sejak dari pagi sampai sekarang, berapa yang keluar daripada lisan kita? Apakah pembicaraan mengenai kebesaran Allah atau mengenai dunia ini? सुबह से लेकर शाम तक हम ये देखें कि हमारे घर में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी वालिदा, हमारी बीवी कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम अपने घर में लेती हैं. Sekarang kita lihat rumah kita lagi, istri kita, putri kita, putra kita, paman kita, kakek kita, nenek dan sebagainya. Berapa kebesaran-kebesaran Allah yang mereka bicarakan setiap hari? हम ये देखें कि हमारी दुकान में सुबह से लेकर रात तक इस बात को कितनी दफा बोला जाता है कि अल्लाह से होता है और अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है उससे कुछ भी नहीं होता. Begitulah di kedai-kedai, di toko-toko yang kita miliki, berapa kebesaran-kebesaran Allah yang dibicarakan oleh kita sendiri, oleh langganan-langganan kita tersebut. दुनिया का कितना तस्करा है, माल का कितना तस्करा है, चीजों का कितना तस्करा है और अल्लाह से होने का कितना तस्करा है, हर आदमी अपने साथ सोच ले. Jadi berapa kebesaran-kebesaran atau perkara-perkara dunia yang kita bicarakan oleh kita dari pagi sampai petang, dan berapa kebesaran keagungan Allah yang kita bicarakan, masing-masing kita sudah mengetahui kalau kita menengok kepada hati masing-masing. ये तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसको सुबह से लेकर शाम तक बोलना पड़ेगा, तब ये यकीन दिल के अंदर उतरेगा. Maka insya Allah kita niatkan mulai hari ini, dari pagi sampai petang kita melatih diri kita untuk membicarakan kebesaran-kebesaran Allah sehingga keyakinan terhujam di hati kita. जब इंसान अल्लाह की बड़ाई को बोलता है, इससे इंसान का ईमान ज्यादा हो जाता है. जब इंसान दुनिया की बड़ाई को बोलता है, इससे इंसान का ईमान कमजोर हो जाता है. Jadi kalau manusia rajin membicarakan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, iman dia meningkat. Tapi kalau manusia membicarakan kebesaran dunia setiap hari, maka iman dia pun akan melemah. यदि जब ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह के दीन पर अमल करना आसान होगा, और जब ईमान कमजोर हो जाएगा फिर अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ये मुश्किल हो जाएगा. Jikalau iman sudah kuat, mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi kalau iman lemah, berat betul-betul untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. ये हमारे बुजुर्ग क्यों फरमाते हैं कि देखो मस्जिद में तालीम का हल्का लगाओ, घर के अंदर तालीम का हल्का लगाओ, दुकान के अंदर तालीम का हल्का लगाओ, ताकि हमारे बच्चों का ये ज़हन बने
कि फजाइल अमाल के फजाइल सुन सुनकर कि भाई जितने भी नक्शे हैं इनसे नहीं कामयाब होंगे, बल्कि हम नमाज के जरिए कामयाब होंगे, हम कुरान पाक की तिलावत के जरिए कामयाब होंगे, हम अल्लाह के जिक्र की वजह से कामयाब होंगे। और ये दुनिया के किस्से और ये वाकयात बच्चों को मत सुनाओ, बल्कि हजरात सहाबा किराम के वाकयात सुनाओ, ताकि उनको अंदर ईमान और अमाल वाले वाकयात हैं, ताकि वो सुन सुन के और पढ़ पढ़ के हमारे बच्चे भी जो है वो ईमान और अमल पे आ जाए। Maka juga alim ulama kita menasihatkan kepada kita lagi untuk mengadakan di rumah kita setiap hari ada ta'lim fadail, juga di masjid pun kita adakan lagi ta'lim fadail. Maka dengan lagi dan lagi kita mendengarkan, membaca tentang hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran tentang fadilah amal, dan anak kita bawa dalam ta'lim di rumah bersama dengan istri kita. Maka dengan lagi dan lagi sering kita mendengarkan fadilah amalan, sehingga kita dan anak kita akan paham bahwasanya kebahagiaan, kejayaan bukan dalam kebendaan dunia, tapi dalam amal-amal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ceritakan lagi-lagi kepada anak kita